back to my channel. Today we are going to discuss another important topic, that is role of pRB as a tumor suppressor gene. Again, I'll tell you, pRB stands for RB protein, right? It is a tumor suppressor gene. Again, you might have been knowing the mechanism and functioning of another tumor suppressor gene that I've discussed in the previous video, that is about p53 gene. So how does tumor suppressor gene work? Its loss of function or a recessive mutation in it may lead to cancer. Okay, and in mutation in pRB protein causes retinoblastoma. It is a type of cancer in which children with retina disorder are born, right? Okay. Again, it acts as a tumor suppressor gene because it helps in controlling cell cycle progression and also induces apoptosis, right? Okay, how does it work? It is a negative regulator for G1 to S phase transition, right? I'll explain you in detail that there is a factor called E2F, right? It is a transcriptional factor and this factor is necessary for the cell to move from G1 to S, right? So what happens? Retinoblastoma or the pRB, I'll mark it with the yellow, right? It gets bound to E2F, right? Binding of RB to E2F leads to it. When the E2F gets bound, transcription stops and the movement of cell from G1 to S is also inhibited, right? So the cell cycle stops, right? When, see, this is the G1 phase, for example, this is the start, this is the end. At the start we see low level of CDK, right? So the RB might get bound to E2F, right? At the end of the G1 phase, high level of CDK, okay, leads to the phosphorylation of RB protein, right? Phosphorylation. So after the phosphorylation, RB protein leaves E2F. RB इज़ लाइक कि भाई मुझे किसी का साथ चाहिए, पहले उसे E2F फ्री मिल रहा था तो वो उसके साथ निकल गया, अब उसे फॉस्फोरस मिल गया तो वो उसके साथ चिपक के उसने E2F को छोड़ दिया. If E2F becomes free, it becomes active and leads to it. So it leads to the transition from G1 phase to the S phase, right?
So when we discuss the factors required for cancer, then there are 3 factors. One is CDK, then we have RB protein, then we have E2F, right? Okay, so CDK, अगर you guys tell me that CDK का लेवल लो होना चाहिए या हाई, RB प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड होना चाहिए या अनफॉस्फोराइलेटेड, और ये एक्टिव या इनएक्टिव, राइट? You can pause down the video and if you wish you can mention in the comment section. Now let's discuss. CDK का लेवल हाई होना चाहिए, राइट? क्योंकि जब CDK का लेवल हाई होगा तभी जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगा और RB प्रोटीन फ्री हो पाएगा, राइट? और RB फ्री होगा तभी तो वो सेल बार बार सेल को प्रमोट करेगा एस फेज़ में एंटर करने में, और जितनी ज़्यादा बार सेल एस फेज़ में एंटर करेगा तो वो रेप्लिकेट करेगा और प्रोलिफरेशन शो करेगा। प्रोलिफरेशन शो करेगा तो सेल डिवीजन होगा और सेल का नंबर बढ़ेगा, विच में लीड टू ट्यूमर और कैंसर, राइट? Then we have RB protein phosphorylated or unphosphorylated. This might be clear. Phosphorylated is necessary. I have told you here, अगर RB phosphorylated होगा तभी तो वो E2F का साथ छोड़ेगा, और E2F जैसे ही साथ छूटा तो वो फटाफट भग के G1 से S फेज़ में ट्रांजिशन करवा देगा। और E2F हमें एक्टिव चाहिए, एक्टिव यानी कि फ्री चाहिए। अगर वो फ्री मिलेगा तभी तो वो फटाफट कैंसर कॉज करवाएगा बार बार एस फेज़ में ट्रांजिशन करके। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, आई होप। ओके, आई टेल यू हियर, आई हैव मेंशन this as a recessive mutation lead to cancer. What is a recessive mutation? That this is RB protein, RB negative, RB positive. This is, you can say, this is the gene. This is a normal gene or the gene of a normal person. But if it shows mutation like this, that is both of them show, then it might cause to retinoblastoma. Why retinoblastoma? What? Why? Because both have become here RB negative, RB negative. RB negative, RB negative, this is a recessive mutation. What is a recessive mutation? Recessive mutation का मतलब basically it is कि दोनों प्रोटीन RB नेगेटिव के होने चाहिए, क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन तभी काम करता है जब दोनों जो हो सेम हो, राइट? जब हम टॉल और स्मॉल वाला डिस्कस करते हैं तो डॉर्फ तो वो तभी दिखता है ना जब दोनों जीन्स रिसेसिव के हों। सेम यहाँ पे दोनों रिसेसिव जीन होंगे तभी रेटिनोब्लास्टिनोमा कॉज होएगा, अदरवाइज एक में इट इज़ नॉर्मल और दोनों अगर RB पॉजिटिव हो गए तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो नॉर्मल जीन है, राइट? आई होप द टॉपिक माइट बी क्लियर टू यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.